Hello everyone, welcome back to Econoplus. In this video, we will be discussing about poverty estimation in India in pre-independence period. What are the committees before independence that suggested the measurement of poverty? Those are Dada Bhai Naroji, National Planning Committee and Bombay Plan. ଏ ସବୁ କମିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କରିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम नेट एग्जाम सेट एग्जाम तथा पीजी एंट्रेंस एग्जाम इंपोर्टेंट अच्छे इंपोर्टेंट अटे चैनल टी सब्सक्राइब करदेवे वीडियो टी बहुत इंपोर्टेंट प्रथम शेष पर्यटन देखिए। चलते स्टार्ट करवा। प्रथम देखा पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। ए कॉमन मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल। तो इनकम लेवल को देखिए मापिया पॉवर्टी ना कंजम्पशन लेवल को देखिए मापिया पॉवर्टी। If income or consumption level fall below a given minimum level, गोटे मिनिमम लेवल थाए जहाँ को कहुए पॉवर्टी लाइन बोली कहुए पॉवर्टी लाइन। जदि आम इनकमटा बा कंजम्पशनटा से लाइन तले अच्छी ताहले आमे कहिबा बिलो पॉवर्टी लाइन। वी आर बिलो पॉवर्टी लाइन बा बीपीएल। जदि आम इनकम लेवल बा कंजम्पशन लेवल ए लाइन रो ऊपर अच्छी ताको कहिबा एबव पॉवर्टी लाइन बा एपीएल। तो बीपीएल एपीएल दोज पीपल हु आर below the poverty line are called below BPL. The people who are above the poverty line are called APL. तो ये सब जो poverty line को estimate केमती करवा से विषय में आज वीडियो डिस्कशन करूँ जे स्वाधीनता पूर्व केमती poverty line estimate करा जाउथला। तो सहित poverty line टा केमती आमे बाहर करवा। तो यहाँ इनकम लेवल कि कंजम्पशन लेवल हो पारे। poverty line calculation एबे poverty line calculation आपनकर नीति आयोग टास्क फोर्स is carried out by Niti Aayog task force through the calculation of poverty line based on data captured by National Sample Survey Office (NSSO) under the Ministry of Statistical and Program Implementation (MOSPI). Ministry of Statistical and Program Implementation. Niti Aayog. What is Niti Aayog? Niti Aayog is a policy think tank which was replaced by Planning Commission. तो आगु Planning Commission आमर poverty estimate करूला एबे Niti Aayog करूची which was earlier responsible for calculating the poverty in India. Earlier Planning Commission calculate करूला एबे Niti Aayog करूची। Niti Aayog किए? Niti Aayog is a policy think tank which replaced Planning Commission. तो एपर्यंत क्लियर हो जाइते भाबुची। आ तो देखि दियंतु poverty is based on income or consumption level. If our income level is fall below the minimum level, that is poverty line, then it is called BPL, below poverty line. I hope it is clear. जीवा नेक्स्ट कंजम्पशन को नबा ना इनकम को नबा। पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने आमे द्रव्य एवं सेवा ऊपर केते खर्च करूचे ताकू देखि जानिबा हम पॉवर्टी लाइन बा हमर इनकम केते हमर एक्सपेंडिचर केते ताकू देखि जानि परिबा जे हम माने पुअर ना पुअर नुहे ताकू देखि कि मापा जाय थाए इंडिया रे, नॉट इन द इनकम लेवल। किंतु इनकम लेवल ले काहे कि निया जाय नहीं कारण तार तीनटी रीजन अछि। प्रथम टू वेरिएशन ऑन इनकम। The income of the self-employed people, daily wages earner, is highly variable, both temporarily and spatially. But while consumption pattern are comparatively most stable, consumption pattern टी समस्त प्राय स्टेबल थाए, चेंज हुए नहीं, किंतु इनकम लेवल सब बड़े चेंज होता है, वेरिएशन होता है। प्रथम कथा। द्वितीय कथा होची एडिशनल इनकम। इवन इफ इन केस ऑफ रेगुलर वेजेस अर्नर देयर आर एडिशनल इनकम, एडिशनल साइड इनकम बा पार्ट टाइम जॉब जे करूची बा किसी साइड इनकम पाउची ताको मापिया पई बहुत डिफिकल्ट होता है, which is difficult to take into account. Then data collection. Third one is data collection. In case of consumption based poverty line, income based poverty line na consumption based poverty line, we have two options: consumption based or income based. In case of income based consumption line, sample based survey use a reference period that is 30 days in which households are asked about their consumption of last 30 days and is taken as representative of general consumption. 30 दिन भितर कौन कौन कंजम्पशन आम करूँ से आमको पचरा जाए और से डाटा कलेक्शन करा जाए जोटा बहुत इजी होता है। बट इन केस ऑफ इनकम लेवल इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ कहीं डिफिकल्टी आम कंजम्पशन कहीं आम कंजम्पशन बेस्ट पॉवर्टी लाइन नहींचु ता विषय रे। तापर नीड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी कहीं मापिबा आम कहीं ना इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। पॉवर्टी एस्टिमेशन
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଦେଉଛେ ସେଟା କାହିଁ ଏକାଡେମିକ୍ पर्पज ପାଇଁ इम्पोर्टेंट नुहे बट also crucial to track the impact and success of various government policies. गवर्नमेंट जेते सब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम करूची तार सक्सेस डिपेंड करि थाए पॉवर्टी रो एस्टिमेशन ऊपर जदि आमे जानि परिबा केते पॉवर्टी अछंती सटीक भाव रे आमे सेही हिसाब रे सेतिकी गवर्नमेंट तार एक्सपेंडिचर करिवो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऊपर किंतु जदि पॉवर्टी केते अछि आमे ठीक से जानि पारुनु ताहले सेही प्रोग्राम गुडी को ठीक से इंप्लीमेंट हे परिबो नै एवं सक्सेसफुल हे परिबो नाही. BPL census is conducted by Ministry of Rural Development in order to identify the poor households. Then poverty elimination plan. The poverty estimates in form of poverty line are used to formulate poor centric poverty elimination plans. Then constitutional requirement. Poverty estimation paves the way for poverty elimination that is in turn prepares the ground for a just and equitable society. Equitable society ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥାଏ. देन वी हैव तारे हम स्टार्ट करिया प्रथमे कोन हेतला प्रथम जो पॉवर्टी एस्टिमेशन दादा भाई नारोजी 1901 रे करथिले. दादा भाई नारोजी तो दादा भाई नारोजी को विषय टे जानिबा. दादा भाई नारोजी को कुहा जाए तांकर से 1825 रु 1917 पर्यंत तांकर लाइफ स्पान थिला. तांको कुहा जाए द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तांकर गोटे थ्योरी जहाँ कुहा जाए ड्रेन थ्योरी बोली मध्यम कुहा जाए. 1806-7 रे से जोड़ा देइथिले तांको विषय टिके देखिबा हमें. द मैन हु वाज द फर्स्ट वन टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन कॉलोनियल इंडिया. तो ब्रिटिश शासन समय रे प्रथमे जे पॉवर्टी लाइन विषय किछि कहिथिले से होजंती दादा भाई नारोजी. ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. He was a Parsi intellectual, educator, cotton trader, and an early Indian political social leader. He was the first one to discuss about poverty line. Se poverty line देई नथिले, but he was the first one to discuss about a poverty line. The question आस्ते who was the first one to discuss about poverty line ताहले दादा भाई नारोजी लिखिबे. Due to his concern of draining of Indian wealth because of the British rule. तो आमे देखिबा दादा भाई नारोजी को विषय रे आउट क्वेश्चन आस्ताय. He was the first to attempt to calculate the national income in India. national income calculation रे मध्य से प्रथमे देइथिले 1876 रु 1868 बेसिक प्राइस रे एवं से नेशनल इनकम हमरो पर कैपिटा इनकम बाहर करथले 20 रुपीज. तो मुंडो पिछा है 20 टंका बोली सी 1867-68 बेसिक प्राइस रे देखैथिले एवं he was the first one to calculate national income in India and he was the first one to discuss about poverty line. Not he was not introduced poverty line, he discussed about poverty line. तो poverty line जो डिस्कस करथिले तांको हिसाब रे poverty line केते होबा दरकार यदि 16 टंका रु 35 टंका पर कैपिटा पर ईयर ऑन 1867-68 प्राइसेस सही हिसाब रे सही बेसिक सही कांस्टेंट प्राइस रे 1876-68 प्राइस रे जड़ी 16 टंका रु 35 टंका जने व्यक्ति इनकम करूची ताहले से पॉवर्टी नुहे एवं ताठू जदि तळे रहूची से पुअर ताठू ऊपर होइले से एबव द पॉवर्टी लाइन. से तांकर बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सेइथिरे से एटा देखैथिले. ही एडवोकेटेड poverty criterion that was based on cost of substantial diets, cost of subsistence or basic diet जोटा कि राइस एंड फ्लोर, दाल, मटन, भेजिटेबल्स, घी, भेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट. तो ए डाएट जोटा कि बेसिक डाएट बंचिबा पई सेथिरे केते खर्च होउची ताकू देखि से बाहर करथिले जे 16 टंका रु 35 टंका खर्च हेइ थाए एवं ताठू जे कम खर्च करूची तार जहार इनकम ताठू कम सी पुअर ताठू जो अधिक सी पुअर नुहे. तो पॉवर्टी लाइन तम कोन आइटम थिला नेसेसरी डाइट जो द्वारा कि राइस एंड फ्लोर, दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल्स ऑयल एंड सॉल्ट व्हिच आर द बेसिक नीड फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव एज पर हिज थियरी. देन तांकर दादा भाई नारोजी प्रपोज्ड व्हाट इज नोन एज द इकोनॉमिक imperialism theory in which he stated the British economic policies were completely draining India. He mentioned his theory in the book Poverty and On-British Rule in India. This is also known as drain theory. याको मध्य drain theory बोली कुहा जाए. तो drain theory के दिथिले दादा भाई नारोजी
द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहुए दादा भाई नौरोजी को कहुए। नेक्स्ट देखा ड्रेन थ्योरी बा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ता विषय देखा। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द constant flow of national wealth from India to England, for which India did not get adequate economic, commercial and material return. तो आमर वेल्थ इंडिया जो इंग्लैंड को पड़ोसी कहुए ड्रेन। द टर्म इकोनॉमिक ड्रेन रेफर्स टू ए पर्सन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट, a portion of national product in India which was not available for consumption of its people but was being drained away to Britain for political reason, and India not getting adequate economic material for it. Dada Bhai Naroji, in his book Poverty and On British Rule in India, published 1871, was the first to raise the issue of resource drain from India to England. Economists such as R.C. Dutt, Dada Bhai Naroji and others have adopted the British siphoning system used to drain India's resources and wealth, the economic drain theory. Drain theory विषय देखा। According to the mercantilist theory, an economic drain occurs when gold and silver leave the country as a result of the unfavorable trade balance. In the 50 years preceding the Battle of Plassey, the East India Company imported billions worth 20 million into India to balance its exports against Indian imports. तो यह विषय आपने पढ़ीदेवे किसी इंपोर्टेंट ना से। देखा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग दादा भाई जो देते दादा भाई नारोजी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रिजनर्स थ्योरी कौन थिला। दादा भाई नारोजी यूज द मेनू फॉर द प्रिजनर्स। तो गोटे आसामी बचापी जहाँ खाद्य खाई थाए से खाद्य को कहुए मिनिमम मिनिमम फूड फॉर सर्वाइव एवं से फूड देखिकी से कैलकुलेट करते। किंतु जदि आम साधारण भाव देखा जो जेल रुहतनी से आउ जेल जो रुहती भितर किसी फरक अच्छी ना। जेल रे केवल आडल्ट्स माने रुहती, आडल्ट्स माने 18 वर्ष जो अधिक से जेल रुहती, किंतु 18 वर्ष जो मैंने कम से जेल बाहर भी रही था। तेणु 18 वर्ष कम बिलो 18 प्लस 18 प्लस जेल बाहर रुहती, कि जेल केवल 18 प्लस रुहती। तो डाएट आउ बाहर जो रुहती डाएट भितर किसी फरक थाए जहाँ सी बाहर करते गोटे फर्मूला पकईकी 3/4 फर्मूला से केमती बाहर एपटे कर देखी। तो टोटाल पॉपुलेशन रे अकॉर्डिंग दादा भाई नारोजी 1/3 होचंती चिल्ड्रेन, 2/3 होचंती एडल्ट जो माने फुल डाएट नियंती। ए चिल्ड्रेन भितर मध्य हाफ 50% होचंती जो माने कम खाद्य खाती बा नील डाएट बोली कहि परिबा। आउ किछि अछंती 50% जो माने एडल्ट डाएट रो हाफ डाएट नियंती। दे आर नील डाएट एटा हाफ डाएट। आउ थर कहूँ टोटाल पॉपुलेशन दुईटा भाग विभक्त करते सी गोटे हूँ चिल्ड्रेन जी होती 1/3 पॉपुलेशन एंड 2/3 पॉपुलेशन इज एडल्ट। चिल्ड्रेन पुणी 50% जो मैंने डाएट नियंती किसी डाएट किसी खाती से मैंने आउ किसी हाफ जो मैंने हाफ डाएट नियंती माने एडल्ट डाएट रो हाफ डाएट एमाने डाएट नियंती माने किसी खाती माने एमाने डाएट किसी खाती पानीय पानीय खाई बंची था। तो जदि आम देखा कैलकुलेट करवा 1/3 इंटू 1/2 माने हाफ इंटू डाएट हूँ 0 तो 0 मल्टीप्लाई कले 0 बाहर सेमती 1/3 इंटू 1/2 हाफ डाएट दैट मीन्स 1/2 तो तार बाहर 1/12 प्लस 2/3 रो फुल डाएट 2/3 तो या बाहर कला बाहर 3/4। इक्वेशन टी देखु फर्मूला केमती बाहरी 3/4 बाहर। तो जेल थियोरी ऑफ पॉपुलेशन जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग हिसाब रे एवरेज पॉवर्टी लाइन विल बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग माने जेल रे जमान बास करती एडल्ट तांको कॉस्ट ऑफ लिविंग रो 3/4 होची एवरेज पॉवर्टी लाइन। इटा गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मन रखिए दादा भाई नारोजी देइथिले 3/4। देन सेकेंड हूँ नेशनल प्लानिंग कमिटीज 1938 आसला। In 1938 National Planning Committee was set up by Subhash Chandra Bose, who was the president of Indian National Congress under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first prime minister of India in the
first independent Prime Minister of India for the purpose of drawing of an economic plan with the fundamental aim to ensure an adequate standard of living for masses. तो नेशनल प्लानिंग कमिटी देइथिला पॉवर्टी लाइन 15 टंका रु 30 टंका पर कैपिटा पर मंथ which are also known as minimum standard of living perspective in which nutritional requirement were implicit. Then we have Bombay plan. Bombay plan टी किए सब मेंबर थिले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट थिले से बॉम्बे रे आसी से प्लानिंग देइथिले JRD टाटा, बिरला, दलाल, श्रीराम, कस्तूरा भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, सर ठाकुरदास and John Mathai. These are the industrialists. The Bombay plan was set of a proposal. एमाने गोटे proposal देइथिले of small group of influential business leaders in Bombay. जहाँ पर यार ना है Bombay plan for the development of post-independent economy of India. The Bombay plan proponents had suggested a poverty line of 75 per capita per year. तो ये आम सब गुड़ा कंपेरिजन कर देखा ये तार गोटे निमोनिक्स बनई DNB प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे आमर 3टी कमिटी DNB, D फॉर दादा भाई नारोजी, N फॉर नेशनल प्लानिंग कमिटी एंड B फॉर बॉम्बे प्लान DNB. दादा भाई नारोजी 1901, 1938 नेशनल प्लानिंग कमिटी, 1944 बॉम्बे प्लान. तो ये हूँ 16 टंका रु 35 टंका पर ईयर पर कैपिटा पर ईयर. ये 15 टंका रु 20 टंका पर कैपिटा पर मंथ डिफरेंस अच्छी पर मंथ. बॉम्बे प्लान 75 पर ईयर. এটা মনে রাখবে মনে রাখিবা ପାଇଁ ସହଜ ହେବ DNB. তো এই ভিডিওରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଆଗରୁ 3ଟି କମିଟି ଥିଲା. ଗୋଟେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି କମିଟି, ଦେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଏଣ୍ଡ ବମ୍ବେ ପ୍ଲାନ୍. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କମିଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା. ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସଜେସନ୍ ଜଣାଇବେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.